Hello everyone, welcome to Vidyamandir classes. I am myself Krutika and we are doing KVPY series. So let's start with the topic photosynthesis. Okay, so we will discuss some questions regarding this topic and also let's see different concepts which are there with regard to photosynthesis in plants. So when we talk about photosynthesis, so basically this is a process which we see in the plants. Okay, ये हम सिर्फ green plants में देखते हैं. So this is an anabolic process. तो anabolic का मतलब है कि basically it is a synthesis process. Okay, so there is formation of some things in this process, that is of photosynthesis. So anabolic process in plants, and mostly you can see the green plants which are there, they will do the photosynthesis. So mostly जो plants होते हैं, they are autotrophic. Okay, but there are few which are partial heterotrophic. Okay, but mostly they are said to be heterotrophic, autotrophic only. It is said कि जो process होता है photosynthesis का, तो that is physico-chemical process. मतलब यहाँ पे physical चीजें भी physical energy भी है and chemical thing is also there. Physically in the terms of light, okay, light is used, so that is a physical thing, and chemical we can say that क्योंकि light is changed into some chemicals, so there it is a physico-chemical process. Physico-chemical process in which there is formation of an organic molecule, or you can say a compound. Okay, organic compound with the help of some raw material. Okay, और ये जो raw material होंगे, these raw material are said to be carbon dioxide, water. Okay, carbon dioxide, water, in the presence of light and chlorophyll pigment. ठीक है, तो बेसिकली दिस इज द डेफिनेशन यू कैन से ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो कि एक फिजिको केमिकल प्रोसेस होता है, और यू कैन से फोटो बायोकेमिकल प्रोसेस. ओके, फोटो बायोकेमिकल प्रोसेस in which there is a formation of some organic compound, and this organic compound is mostly said to be the sugar, and the sugar is said to be glucose. Okay, so यहाँ पे organic compound जो बनाया जाता है plants में, that is glucose, and that is stored if not required. मतलब उसी टाइम पे अगर उनको यूज नहीं है ग्लूकोज का, तो that is stored in the form of starch, and when it is getting transported, it is transported in the form of sucrose. ये हम देख चुके हैं when we were doing the transport in plants. Okay, so organic compound जो बनाया जाएगा, that is the glucose, and for the making of glucose you require some raw material, and mostly the raw materials are carbon dioxide and water. Okay, these are the two raw material जो कि plant externally मतलब use करता है, and light जो है it is in the physical form that you can say as the energy. Okay, and chlorophyll is the plant material. Okay, so that is not said to be the raw material. So अगर यहाँ इस context में there can be a question asked. Okay, there can be a question asked. The question is, what is the raw material for photosynthesis? Okay, what is the raw material for photosynthesis?
and the options are A, carbon dioxide, B is water, C is both A and B, and D will be alcohol. Okay, D will be alcohol, or you can say just none. Okay, कोई भी हो सकता है. So यहाँ पे the answer for this will be क्या होगा? अभी जो हमने डिस्कस किया है, क्या होगा इसका आंसर? हाँ, इसका आंसर क्या होगा? The answer will be this. Okay, both A and B. मतलब carbon dioxide and water both are the raw materials. If they do not give this water, अगर नहीं दिया, सिर्फ carbon dioxide दिया, and in the B option if they give you some chlorophyll दे दिया, okay, chlorophyll दे दिया, in the C option they give you oxygen, तो ऐसा अगर है तो कार्बन डाइऑक्साइड विल बी दी आंसर. सो यू हैव टू नो कि रॉ मटेरियल जो फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. ओके, दीज आर द रॉ मटेरियल्स. मोस्टली ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स गेट little bit confused in this. They say कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ऑल्सो क्लोरोफिल, ये सारे ही रॉ मटेरियल है. नहीं, रॉ मटेरियल वो होता है जो हम बाहर से लेते हैं, मतलब जो प्लांट जो है वो बाहर से लेता है. जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इट टेक्स फ्रॉम आउटसाइड. Okay, and they are the material, they are not in the form of some photons or anything. Okay, they are as such, मतलब gas या liquid form में होगा. So that is taken up by the plants from the outside, and that's why it is said to be the raw material for photosynthesis. Okay, chlorophyll इसलिए raw material नहीं है because it is the content of the plant. Okay, plant के अंदर ही chlorophyll होता है. So that is said not to be the raw material for photosynthesis. ओके, नाउ टू फाइंड आउट कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो या कार्बन डाइऑक्साइड इज रिक्वायर्ड और लाइट इज रिक्वायर्ड, ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे बाय डिफरेंट साइंटिस्ट. ओके, बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपना अपना काम बताया था विथ रिगार्ड टू दिस. सो देयर वर many scientists, and they after several experiments they came to know that जो भी process होता है photosynthesis का और जो equation उन्होंने दिया, तो वो हम देखते हैं पहले यहाँ पे. So there was one experiment that was test for sunlight and the chlorophyll. Okay, to see सनलाइट और क्लोरोफिल पिगमेंट क्यों कैसे इंपॉर्टेंट है या नहीं है, तो इसके लिए दे हैड डन एन एक्सपेरिमेंट, एंड द एक्सपेरिमेंट इन द एक्सपेरिमेंट दे हैड टेकन सम लीव्स. ओके, एक प्लांट लिया, दैट पर्टिकुलर प्लांट okay, there was a plant taken which had variegated leaves. Okay, इसमें variegated leaves थे. Okay, so the plant had variegated leaves. Variegated leaves का मतलब है they will have some patches of yellow and some patches of green color. Okay, so जहाँ पे green है वहाँ पे chlorophyll present होता है, जहाँ yellow है there will be other pigments or there won't be chlorophyll present in the yellow part. ठीक है, तो such leaves they are called as variegated leaves and the plant is variegated plant. ठीक है, तो ऐसा उन्होंने plant लिया and they gave sunlight for this plant. Okay, after giving sunlight they tested this test for starch was done with iodine. Okay, iodine solution लेके इन्होंने टेस्ट फॉर स्टार्च किया. So when they tested for starch,
ओके, जब उन्होंने टेस्ट किया स्टार्च के लिए, तो दे फाउंड आउट ये जो मिडल वाला रीजन है इट रिमेन्ड येलो। ओके, जब इन्होंने आयोडीन से टेस्ट किया तो इस पार्ट का जो कलर है वो येलो ही था, बट द पार्ट ओवर हियर एट दिस, यहाँ पे जो पार्ट था, दिस चेंज इट्स कलर टू ब्लू ब्लैक। ओके, तो ये जो है वो ब्लू ब्लैक कलरेशन हो गया। सो दिस वाज ब्लू ब्लैक colored, and blue black color matlab there is presence of starch. And why there is presence of starch? क्योंकि वहां पे photosynthesis हुआ. So from this particular experiment they found out कि sunlight and chlorophyll are important for the process of photosynthesis. Okay, so this was one of the tests. So ये यहाँ पे conclusion ये रहा कि sunlight and chlorophyll are must for photosynthesis. क्योंकि जो ग्रीन कलर पार्ट था दैट इज क्लोरोफिल एंड सनलाइट वाज गिवन, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ओनली द स्टार्च विल बी फॉर्म्ड, ये उनको पता चल गया। नेक्स्ट देयर वाज एन एक्सपेरिमेंट व्हिच वाज टेस्ट फॉर carbon dioxide. Okay, test for carbon dioxide was done, and this particular test was said to be Moll's half leaf experiment. Okay, इसको उन्होंने Moll's half leaf experiment, the scientist over here was Moll. According to the Moll's half-leaf experiment, they had taken a plant. Okay, एक plant लिया था. 1 second. Okay, they took a potted plant. Okay, ऐसे potted plant लिया, and one of the leaf of the plant. Okay, एक leaf of the plant was immersed in a tube, in a bottle. Over here it is a bottle. So beaker में या एक tube में उन्होंने उस leaf को insert किया, immerse किया, and inside the tube, okay, inside the bottle there was presence of KOH solution. KOH solution, or you can take cotton soaked in. There was cotton soaked in KOH solution. This both the thing can be taken. So ये KOH क्या करता है? It will absorb all the carbon dioxide present in the surrounding. So जो भी इस लीफ जो हाफ अंदर था, ओके, हाफ इमर्स जो लीफ था उसके अराउंड में अगर कुछ भी कार्बन डाइऑक्साइड है या उस बॉटल में कुछ भी कार्बन डाइऑक्साइड है, तो वो सारा का सारा अब्सॉर्ब किया था KOH ने, जिसके कारण जब आप ये लीफ प्लग करके, व्हेन यू प्लग द लीफ एंड टेस्ट फॉर स्टार्च, you will not get coloration in the half part which was immersed in the test tube. Okay, so जो हिस्सा test tube में immersed था वहां पे आपको कोई coloration नहीं मिलेगा. This states that कि if carbon dioxide is not present, that means starch won't be produced. Okay, so carbon dioxide is also very much important for the formation of glucose which is then stored as starch. ठीक है, so जब हमने test for starch किया, so there was no blue black कलर। अब ऐसा है कि जब आप ये पॉटेड प्लांट जो है उसको आपको सनलाइट में रखना ही पड़ेगा, क्योंकि इफ यू डू नॉट गिव सनलाइट ऑब्वियसली द फोटोसिंथेसिस विल नॉट टेक प्लेस। तो उसके लिए आपको रखना ही पड़ेगा इस पर्टिकुलर प्लांट को सनलाइट में। सो जहां जहां सनलाइट गिरता है, जैसे कि इन दी अपर हाफ, ओके, जो अपर हाफ रीजन है वहां पे सनलाइट गिर जाएगा, दैट मीन्स द स्टार्च विल बी प्रोड्यूस्ड ओवर देयर। एंड जब आप उसको टेस्ट फॉर स्टार्च करोगे विथ आयोडीन सोल्यूशन, यू विल गेट ब्लू ब्लैक कलरेशन इन द अपर हाफ। लेकिन जो लोअर हाफ है वहां पे देयर इज नो कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है और आप कितना भी लाइट दोगे तो देयर वोंट बी एनी स्टार्च फॉर्म। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है तो ऑब्वियसली स्टार्च वोंट बी फॉर्म। तो दैट्स व्हाई दिस प्रूव दैट, दिस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट प्रूव दैट कि
कार्बन डाइऑक्साइड इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ऐसे ही सेवरल एक्सपेरिमेंट्स किए थे डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने, एंड आफ्टर दैट दे केम टू नो कि जो फोटोसिंथेसिस का जो इक्वेशन है, ओके, इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड ऑल, हाउ इट वाज डिराइव्ड, दैट कैन बी समराइज्ड ओवर हियर. So when we talk about the equation for photosynthesis, you require 6 molecules of carbon dioxide plus 12 molecules of water in the presence of sunlight and chlorophyll pigment. Okay, chlorophyll pigment. You will get the formation of C6H12O6, which is glucose, plus 6 water molecules will get released, plus 6 oxygen molecules जो है वो रिलीज हो जाएंगे या इवेपोरेट हो जाते हैं. So this is how they summarize the equation for photosynthesis. Now if you see in this particular equation, what is happening, this water is getting changed into oxygen, ओके. तो यहाँ पे जो है वाटर चेंज होगा ऑक्सीजन में, इसका मतलब देयर इज अ प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन विच इज टेकिंग प्लेस. Okay, there is oxidation which is taking place, and if you see over here, the carbon dioxide is changing into glucose. So that means over here the change is happening which is said to be reduction. Okay, reduction हो रहा है. So carbon dioxide is changing into or converting into glucose, whereas water जो है वो oxygen में convert हो जाएगा. तो जो भी हमें oxygen मिलता है from photosynthesis, it will come from water molecule. Okay, and for one molecule of oxygen released, you require 2 molecules of water. तो एक oxygen release होने के लिए आपको हमेशा 2 water molecules का breakdown होना चाहिए. ठीक है. So that's why we are taking 12 water molecules. Okay, 12 water molecules giving you 6 carbon oxygen. So ये balance करने के लिए और 6 जो है water release हो जाएंगे. Yeah, Krebs cycle is not a part of photosynthesis. It is the part of respiration. तो हम जब respiration discuss करेंगे उस time पे हम Krebs cycle की बात करेंगे. ठीक है. Importance of mineral is not asked in KVPY. No, importance नहीं पूछते हैं KVPY में. उतना ऐसे minerals का importance नहीं पूछते हैं. ठीक है. तो क्लियर है ये इक्वेशन एंड ऑल ऑफ द फोटोसिंथेसिस. ये आप मतलब पढ़ के लोअर क्लासेस में आपने ये पढ़ा है. तो जस्ट हम यहाँ पे थोड़ा जो भी प्रोसेसेस होते हैं, मतलब क्या रिएक्शन वगैरह होता है, तो वो हम देखेंगे, वो द साइकिल एंड ऑल विच यू मस्ट हैव नॉट स्टडीड इन योर लोअर क्लासेस. तो उस पे हम थोड़ा ध्यान देते हैं यहाँ पे. सो नेक्स्ट हम बात करते हैं साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस की. Now, as you all know कि photosynthesis will happen in all those green parts. Okay, जो भी green parts होंगे plant में वहाँ पे photosynthesis होगा. So that means कि जो green leaves होते हैं वहाँ पे तो होगा ही. ठीक है, green leaves में तो that is the main thing. Okay, green leaves में होगा. इसके अलावा जो young और green stem होते हैं, green stem
then you have the young birds, okay, young birds and all. तो इन जगह पे photosynthesis होगा. And for the photosynthesis to take place, you require an organelle, which is very important, okay, for the plant. And that organelle is said to be the क्लोरोप्लास्ट. ठीक है, तो ये देखो क्लोरोप्लास्ट है. तो दिस इज जस्ट मतलब यहाँ पे सिर्फ एक ही ग्राना दिखाया है, ओके, एक ही ग्रानम दिखाया है. सो वैसे तो बहुत सारे होते हैं. ओके, क्लोरोप्लास्ट ऐसा रहता है. सो यू हैव अ डबल मेम्ब्रेन. Okay, this organelle is a double membrane. So this is outer and you have the inner. Inside, if you come of the chloroplast, you will have these round, you can say oval kind of structures. Okay, इनके में membrane होता है. So this one of this structure is called as the thylakoid. Okay, one of this is called as the thylakoid. When the thylakoid they pile together, they will be said as grana. ओके, मतलब एक को ग्रैनम बोलेंगे, बहुत सारे हैं तो ग्रैना बोलेंगे. सो यू कैन सी, ओके, ग्रैनम बोलते हैं एक को. सो बहुत सारे थाइलोकॉइड जो है, एक के सिंगल को थाइलोकॉइड बोलेंगे. जब बहुत सारे होते हैं पाइल्ड अप, देन इट इज कॉल्ड एज अ ग्रैनम. व्हेन यू see, or you can, if you see the inner of the thylakoid, it is a cavity kind of thing which is called as lumen. Lumen मतलब cavity होता है. Okay, cavity. These are connected to one another. The thylakoids will be connected to one another by the lamella. Okay, जिसको हम granal lamellae बोलते हैं. They are called as the lamellae. And this part, which is the matrix, you can say the matrix of the chloroplast, this is called as the stroma. Okay, इसको हम stroma बोलेंगे. So for the site of photosynthesis, the site of photosynthesis will be all these green leaves, green stem and young buds, in which there will be presence of the chloroplast. Okay, so mostly जो organelle important है for photosynthesis, it is the chloroplast. And inside the chloroplast, if you see, there is division of labor. Okay, there is division of labor. That means कि जो पूरा क्लोरोप्लास्ट होगा उसको हम डिवाइड कर सकते हैं इनटू टू पार्ट्स. वन इज द थाइलाकॉइड और दूसरा है स्ट्रोमा पार्ट. Okay, one is the thylakoid and दूसरा है stroma part. The thylakoid which is there is the one which is doing half of the reaction, that is the light reaction will take place over here, because it has the presence of pigments and proteins. Okay, proteins और pigments यहाँ पे रहेंगे. And जो stroma part है, stroma will have the enzymes. Okay, it will have the enzymes and it will help in the dark reaction. यहाँ पे dark reaction होता है and it has the enzymes. Okay, enzymes and proteins will also be present. Also stroma region में तो DNA रहता है, circular DNA, and then ribosomes will also be there in the stroma region. So this is how the work is divided in the chloroplast. The thylakoid will do some work, whereas the stroma will do the other work. ठीक है. So this is the division of labor that you see in the chloroplast. Basically, अगर हम significance of photosynthesis की बात करते हैं तो photosynthesis used, or this process is the only process which will give oxygen, okay, to the whole world, you can say, or the जो भी living organisms है, जो aerobic organisms है, उनको oxygen बहुत important है. तो उसके लिए photosynthesis is the only process by which they can acquire oxygen. So तो जो भी ऑक्सीजन आता है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से आता है.
For the photosynthesis, you require certain pigments. Okay, so you have some pigments of photosynthesis. Pigments of photosynthesis. So अगर आपको photosynthesis के pigment जानना है तो you have to take the leaves of any plants. Okay, कोई भी plant ले लो. तो mostly हम experiment जब करते हैं तो we take leaves of vinca. Okay, vinca plant. So you have to take that leaves. You have to take mortar and pestle and you have to crush the leaves in that with some solvent जैसे कि petroleum ether लेते हैं. Okay, or ethanol and petroleum ether ये दोनों लेते हैं and you just crush them and make a paste. After making the paste, you will strain it. Okay, you have to strain it with the muslin cloth and you have to collect the liquid which you get. After collecting the liquid, you have to take a chromatographic paper. Okay, chromatographic paper लिया जाता है and on that chromatographic paper you have to spot this liquid. Okay, spot by spot आपको उस पे apply करना है. So there is a paper. Okay, ये before में है. तो जब आप ये पेपर लेते हो, this is a chromatographic paper. Okay, chromatographic paper. So you have to apply a spot. यहाँ पे आप spot लगाओ, 3-4 बार spot लगाओ. And after that, you have to immerse this particular strip of paper into the solvent. Okay, एक जो solvent मतलब वही petroleum ether will be the solvent. Petroleum ether and ethanol इनमें आपको उसमें एक chamber type होता है. You have to immerse this paper in that and after some time slowly by slowly जो भी pigments है वो separate होना start करेंगे. So this particular spot will move and it will separate the pigments. तो जिस मतलब line it will depend कौन सा pigment किस पे किस further जाता है and you will get the different colors of that particular pigment. So जो पहला है that is chlorophyll B is the one which is the first pigment. Okay, ये जो lower most जो है वो chlorophyll B होगा which is yellowish green color. Then you have the chlorophyll A which is said to be blue green. Okay, blue green type होता है. Then is the yellow color pigment which is xanthophyll and then orange color pigment जो कि carotene है. So ये आपको 4 pigments मिलेंगे in that leaf. Okay, crushed leaf. So जो pigments होते हैं, pigments of photosynthesis, they are mainly chlorophyll A and B. Okay, chlorophyll A and B. Then you have the xanthophylls and the carotene. So when we talk about the higher plants and all, we have these particular pigments. But जब हम algae की बात करते हैं तो वहाँ पे आपको chlorophyll A, B, C, D ये सब मिलेंगे. Okay, A, B, C, D. This chlorophyll will be present in the lower forms, whereas xanthophylls and carotenoids will be present. Okay, इसके अलावा the red algae which is present. रेड alga की अगर हम बात करते हैं तो रेड algae it has a particular phycobilin pigment which is called as erythrin. Okay, erythrin that is of phycoerythrin pigment रहता है यहाँ पे. Okay, phycoerythrin. So this particular pigment is red color pigment which is a phycobilin pigment जो कि सिर्फ और सिर्फ रेड algae में रहेगा. बाकी algae में ये नहीं रहता है.
So this is a particular different kind of pigment which you can see in the alga. Okay, red alga. Red alga, or you can say also it is present in cyanobacteria and red alga. तो इन दोनों में ये particular pigment रहता है. Okay, so जो the process है जो photosynthesis का, the process of photosynthesis, you can divide this into two reaction. One is said to be the light reaction, और जो दूसरा है that is the dark reaction. Okay, एक है light reaction, दूसरा है dark reaction. जो light reaction है, light reaction, it takes place in the thylakoid, जैसे हमने बोला. Okay, so this happens in the thylakoid, whereas जो dark reaction है, it happens in the stroma. ओके, तो फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में ही होता है, तो वो हमें मेंशन नहीं करना है यहाँ पे. तो लाइट रिएक्शन इज द photochemical phase. So this is a photochemical phase, whereas dark reaction is called as the biosynthetic phase. Okay, so during the light reaction, the light is captured. Okay, light photons are captured by the thylakoid, by the pigments which are present in the thylakoid, and it is changed into chemical energy. Whereas in the dark reaction, यही जो chemical energy जो चेंज हुई है, उसको यूज करके वी सिंथेसाइज, मतलब जो प्लांट्स है वो सिंथेसाइज करते हैं ग्लूकोज. तो इसलिए उसको बायोसिंथेटिक फेज बोला है, बिकॉज देयर आर एंजाइम्स इन्वॉल्व्ड इन दिस प्रोसेस एंड देयर इज सिंथेसिस ऑफ सम थिंग्स, जैसे कि ग्लूकोज सिंथेसाइज्ड, ऑक्सीजन इज रिलीज्ड एंड ऑल. So that's why it is said to be a biosynthetic phase. Now ये light reaction और dark reaction इसलिए हम बोलते हैं. लाइट रिएक्शन मतलब यहाँ पे लाइट डिपेंडेंट फेज होता है, ये लाइट डिपेंडेंट फेज है, इसलिए लाइट रिएक्शन. बट द डार्क रिएक्शन डजंट मीन कि इट टेक्स प्लेस इन द डार्क. ओके, मतलब नाइट टाइम में होता है, ऐसा नहीं है. ओनली थिंग, इट जस्ट लाइट का ऑपोजिट डार्क होता है, इसलिए इसको ऐसा नाम दिया है. ऑल्सो यू कैन से कि जो डार्क रिएक्शन है, इट डजंट एक्चुअली रिक्वायर लाइट. ओके, उसमें लाइट नहीं चाहिए, बट उसको प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट चाहिए. एंड प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट क्या होते हैं? तो आफ्टर द लाइट रिएक्शन इज कंप्लीट, द प्रोडक्ट विच आर फॉर्म्ड इज ATP and there is formation of NADPH. Okay, ATP and NADPH जो है वो फॉर्म होते हैं in this process, and with this also oxygen जो है वो release होगा in the light reaction, that is released outside, and whatever the products which are there, ATP and NADPH, that is utilized in the dark reaction. Okay, यहाँ पे यूटिलाइज होता है. एंड डार्क रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है, दैट इज मेनली द ग्लूकोज. ओके, ग्लूकोज इज फॉर्म. Now, for the light reaction to take place, the plants they have something called as the photosystem. Okay, plants में photosystem रहता है. तब photosystem क्या होते हैं? Photosystem are basically some photosynthetic units, or they are said to be a group of some pigments. Okay, pigment के group होते हैं which will absorb some wavelength of light and pass it and they will help in the conversion of light energy into chemical energy. So that is known as a photosystem. So photosystem, they are group of
pigments. So they are group of pigments which will take part in the conversion of light energy into the chemical energy. ओके, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलने के लिए ये फोटो सिस्टम्स काम करते हैं। सो अगर हम बात करें फोटो सिस्टम की, तो देयर इन दी प्लांट्स देयर आर टू फोटो सिस्टम। ओके, दो से फोटो सिस्टम है, एक है फोटो सिस्टम 1, another one is photo system, okay, photo system 1 and photo system 2. now 1 और 2 जो है उनके डिस्कवरी पे डिपेंड है। 1 जो है वो पहले डिस्कवर्ड है, 2 जो है वो बाद में डिस्कवर्ड है, तो इसलिए 1 and 2। Now, this particular photo systems, they are made up of two things. एक है यहाँ पे reaction center होता है और दूसरा है light harvesting complex. Okay, so one is a reaction center, another one is a light harvesting complex. तो दोनों में ऐसे ही रहेगा, there will be a reaction center and light harvesting complex. यहाँ पे 1 लगाते हैं हम because it is a part of photo system 1. दिस पर्टिकुलर लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जो है ये बना होता है सम पिगमेंट्स एंड प्रोटीन से। सो दे आर मेड अप ऑफ सम पिगमेंट्स एंड प्रोटीन्स, ठीक है। और ये जो रिएक्शन सेंटर जो होता है, रिएक्शन सेंटर ओवर हियर इज मेड अप ऑफ क्लोरोफिल ए बिकॉज दैट इज द डोमिनेंट पिगमेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे क्लोरोफिल ए से बना होता है एंड दिस पर्टिकुलर क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल इट एक्टिवेट्स एट 700 नैनोमीटर। सो इसलिए हम इसको P700 बोलते हैं, फोटोसिस्टम P700, फोटोसिस्टम 700, ठीक है। So because this chlorophyll pigment it activates at 700 nanometers. Whereas अगर हम फोटो सिस्टम 2 की बात करते हैं तो वो भी दो चीजों से बना है, that is a reaction center. Okay, it has a reaction center and an LHC2 complex. Okay, LHC complex 2 होता है यहाँ पे। The first reaction जो सेंटर है यहाँ पे क्लोरोफिल A से बना है, बट इसका क्लोरोफिल A will get activated at 680 nanometers. 680 nanometers पे एक्टिवेट होता है। Whereas the LHC2 complex जो है वो बना है पिगमेंट्स एंड प्रोटीन से। ओके, पिगमेंट्स और प्रोटीन से बना होता है। सो नेक्स्ट आई विल जस्ट शो यू वन पर्टिकुलर फोटो सिस्टम, मतलब कैसे काम करता है वो। So this is the reaction center, that is a chlorophyll A molecule,
ओके, और बाकी के जो साइड में है, दीज आर दी लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है। नाउ व्हाट हैपेंस, जैसे ही लाइट रेज, ओके, जैसे ही लाइट रेज विल फॉल ऑन दिस लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, ओके, जो लाइट हार्वेस्टिंग जो है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स विल सराउंड द रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर ऐसे मिडल में होगा और बाकी के जो भी पिगमेंट्स है दे विल बी सराउंडिंग दी reaction center. Okay, so they are the first ones to receive the sunlight. So sunlight will fall on these pigment molecules. Okay, so pigment molecules जो भी रहेंगे, they will take in, okay, इससे pigment molecules रहते हैं पास में। So what this will do, they will take in the energy, okay, photons जो है वो यहाँ पे receive होते हैं। So when they receive the photons, they will get excited, okay, जैसे आपने chemistry में पढ़ा है। So जो भी electrons होते हैं, okay, they will get excited, they will jump to the next level. तो वैसे ही ये जो photons आते हैं तो they will get excited, this pigment molecule get excited and it will pass its energy to the next level. फिर शांत हो जाएंगे, वापस से इनकी एनर्जी नीचे आ जाती है। इट विल पास इट टू द नेक्स्ट, देन इट विल पास इट टू द नेक्स्ट वन, और ऐसे करके सारे जो पिगमेंट मॉलिक्यूल्स है वो अपनी एनर्जी एक किसी मॉलिक्यूल को देता है जो कि आगे जाके उसको पास करेगा। ओके, विल पास टू दी सेंटर मॉलिक्यूल। तो जो भी सेंटर मॉलिक्यूल में है दैट इज दी two atoms of chlorophyll A pigment, you can say. So there is a pair of chlorophyll A molecule which is there in the reaction center. So they will receive the energy at the end. So ऐसे यहाँ पे भी वही होता है, the energy gets passed to one source and this source will pass its energy to the reaction center. So जैसे ही reaction center के पास energy आ जाती है तो वो it also will get excited, और जैसे ही वो excite होगा it will pass electrons to the, electron यहाँ पे excite हो जाते हैं। So two electrons will get excited which are then taken up by a primary electron acceptor. ओके, एक प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है जो कि इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा। सो एंड देन इट विल पास इट टू द नेक्स्ट मॉलिक्यूल एंड द नेक्स्ट। तो ऐसे रहता है द रिएक्शन, सॉरी, द फोटो सिस्टम। ओके, तो दिस इज द जनरल थिंग ऑफ द फोटो सिस्टम। नाउ अलग दो टाइप के फोटो सिस्टम है, एक है फोटो सिस्टम 1 और दूसरा है फोटो सिस्टम 2। फोटो सिस्टम 1 will receive wavelength of 700 nanometers, so it will get excited at 700 nanometers, whereas photo system 2 will get excited at 680 nanometers. So on the basis of the wavelength they will pass the electron, they will excite the electrons, and the electron will be accepted by some primary electron acceptors which are present in the cells. Primary electron एक्सेप्टर होता है। तो सेम थिंग फॉलोज फॉर ऑल द फोटो सिस्टम जो भी है। तो दिस इज जस्ट द जनरल थिंग आई हैव टोल्ड यू, जस्ट दी कैसे क्या इनमें एक्चुअली रहता है। ठीक है, सो बाय दिस फोटो सिस्टम, ओके, बाय दिस फोटो सिस्टम there is production of ATP and NADPH will be produced. Okay, this is how there will be production of ATP and all. So this is non-cyclic
फोटोफॉस्फोराइलेशन. Photophosphorylation मतलब in the presence of sunlight there is formation of ATP. So in presence of sunlight, ADP will combine with inorganic phosphate to form ATP. So that is called as photophosphorylation. And non-cyclic matlab it will the flow of electron will not come back to the first electron donor, you can say. Okay, so in the non-cyclic photophosphorylation आपके दो photo systems होते हैं PS2 and PS1. Now the arrangement of them are different. PS2 जो होता है it is first, it will play its role first, and then PS1 रहता है. So जो भी light है from the sun it will fall on the PS2 and PS1. दोनों पे light fall करता है क्योंकि both of them they have pigment molecules. So pigment molecule जहाँ होता है light will be absorbed by the pigment molecules, and once they receive the light, okay, once they receive the light they will excite electrons. Okay, electrons जो है वो excite हो जाएंगे. जो भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं दे आर टेकन अप बाय द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एंड पास टू द नेक्स्ट मॉलिक्यूल दैट इज प्लास्टोक्यूनॉन. प्लास्टोक्यूनॉन को पास करेंगे. जैसे ही प्लास्टोक्यूनॉन को पास करते हैं दिस प्लास्टोक्यूनॉन विल गेट रिड्यूस्ड. ओके, रिड्यूस होता है एंड इट विल गिव. तो रिड्यूस होने के बाद it will again get oxidized. So when it gets oxidized it will leave protons. Okay, proton जो है वो lumen में छोड़ देता है. After that electrons will pass to cytochrome. Okay, cytochrome होते हैं in the membranes. Okay, ये जो है this is the membrane, thylakoid membrane है ये, and this is the thylakoid lumen. So जो thylakoid actual में कैसे रहता है thylakoid? ओके, ऐसे रहेगा ना थाइलोकॉइड. तो थाइलोकॉइड यहाँ पे होता है PS2, यहाँ होता है PS1 एंड इनके बीच में होता है दिस साइटोक्रोम. ठीक है, और दिस इज द ल्यूमेन ऑफ द थाइलोकॉइड वेयर द प्रोटॉन्स विल गेट कलेक्टेड. तो PS2 will give the जैसे PS2 को लाइट मिलता है the electrons will get excited, taken up by the primary electron acceptor. The electron will pass to the next carrier which is plastoquinone. Plastoquinone अपने electrons जो है अब pass करेगा to a cytochrome B6F. This electrons will go to the plastocyanin. ये प्लास्टोसाइनिन अब इलेक्ट्रॉन किसको देता है? PS1 को. तो PS1 को इलेक्ट्रॉन्स देता है. देन PS1 will give the electrons to फेरिडॉक्सिन. ओके, फेरिडॉक्सिन. देन FNR आता है यहाँ पे. इसके बाद सो दिस इज एन एंजाइम विच इज फेरिडॉक्सिन NADP रिडक्टेज एंजाइम है जो कि NADP को रिड्यूस करेगा NADPH में. ठीक है, सो दिस इज नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन. इसको इसलिए बोला है कि once the electrons which are lost from the PS2 doesn't come back to the PS2 in a cyclic manner. Okay, cyclic manner से electrons वापस नहीं आते हैं, इसलिए इसको नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन बोला है. फोटोफॉस्फोराइलेशन मतलब जो भी प्रोटॉन्स यहाँ पे इकट्ठा हो जाएंगे, whatever the protons which gets accumulated in the lumen will get pumped through this ATP synthase. ATP synthase एक कॉम्प्लेक्स होता है जिसके थ्रू ATP बनता है. ठीक है, this will get pumped through this ATP synthase complex and ATP will be formed. So there is formation of ATP, there is formation of NADPH जो कि लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट होते हैं. इसके अलावा देयर इज ऑल्सो फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन. ओके, ऑक्सीजन भी फॉर्म होगा. तो यहाँ पे क्या होता है एट PS2 देयर इज अ
complex which is present, that is oxygen evolving complex. Okay, oxygen evolving complex करके रहता है, जो क्या करेगा, water molecule को split करेगा. Photolysis of water, you can say, is taking place over here. Photolysis of water. Okay, photolysis of water will take place, wherein the water will get broken down or split into oxygen, protons and electrons. Okay, protons and electrons. So electron जो भी form होते हैं, those electrons are taken up by the PS2. So जो refill होती है electrons की, that will come from an external donor of electron, that is water. Okay, so PS2 के पास external donor है, that is water. That will give the electrons which were lost from the PS2. ठीक है, एंड जो भी प्रोटॉन्स है, दिस प्रोटॉन्स विल हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, एंड ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होता है बाहर. So this is non-cyclic photophosphorylation, which is very important step of the light reaction. अगर ये नहीं होगा तो obviously the dark reaction will not take place. ठीक है, सो नेक्स्ट हम बात करते हैं दी साइकिल्स विच आर प्रेजेंट इन दी which are important for the formation of glucose. Okay, and the important cycle which is very much important for photosynthesis is the Calvin cycle. पिगमेंट पेपर, क्रोमेटोग्राफिक पेपर पे कोई एज सच पिगमेंट नहीं होता है. क्रोमेटोग्राफिक पेपर इज काइंड ऑफ अ फिल्टर. ओके, फिल्टर पेपर के जैसे होता है, जैसे कि इट विल फिल्टर, इट विल सेपरेट द डिफरेंट पिगमेंट्स व्हेन इट गेट्स द सॉल्वेंट. और हम ऐसे सॉल्वेंट यूज करते हैं जो कि वो पिगमेंट सोल्यूबल होते हैं उसमें, ताकि वो अच्छे से सेपरेट हो सके. अच्छा, PS1 एंड PS2 मतलब फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2. PS1 PS2, फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2. अभी जो मैंने तुम्हें समझाया है क्या रहता है इन द फोटो सिस्टम. ओके, यू कैन सी ना, फोटो सिस्टम में ये सेटअप होता है फोटो सिस्टम. दिस इज अ फोटो सिस्टम. ओके, ये एक फोटो सिस्टम है. This is a photosystem which is made up of a reaction center. Reaction center में हमेशा chlorophyll A pigment रहता है with surrounding light harvesting complex. Light harvesting complex are made up of different kind of pigments. और वो कौन से pigments होते हैं? Xanthophylls, carotenes, okay, chlorophyll B. तो ये सारे मिलके बनाते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स. इसके अलावा देयर इज आल्सो सम प्रोटीन्स व्हिच आर रिक्वायर्ड. ओके, हमेशा प्रोटीन्स तो चाहिए होते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स. ठीक है, तो दिस इज अ फोटो सिस्टम. अब 1 एंड 2 ये जस्ट उनकी डिस्कवरी पे डिपेंड करता है, एंड ऑल्सो वन डिफरेंस इज दी क्लोरोफिल ए किस वेवलेंथ पे एक्साइट होगा. ओके, ऑन विच कौन सा वेवलेंथ रिसीव करके वो जब इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करता है, उसके ऊपर यू हैव द PS1 एंड PS2. So now we are talking about the dark reaction. And dark reactions के लिए जो मेन इंपॉर्टेंट जो साइकिल होती है, दैट इज सेड टू बी द कैल्विन साइकिल. ओके, कैल्विन साइकिल को हम C3 पाथवे भी बोलते हैं. ओके, क्यों बोलते हैं एंड ऑल आई विल टेल यू. अब कैल्विन साइकिल जो है, इट वाज डिस्कवर्ड बाय मेल्विन कैल्विन. Okay, discovered by Melvin Kelvin. Now this Kelvin जो है, it was working on one alga. The name of the alga was chlorella. Okay, chlorella पे काम कर रहा था.
So this green alga gave the first product, okay, of the Calvin cycle to be a C3 compound or a 3 carbon compound was the first product. तो यहाँ पे जो first stable compound जो form हुआ था, that was a 3 carbon sugar or a 3 carbon compound. Okay, 3 carbon compound हुआ था, that was 3 phosphoglyceric acid. Okay, 3 phosphoglyceric acid was the first 3 carbon compound formed in the Calvin cycle. इसलिए ये C3 pathways को बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे जो first stable compound जो था it was a 3 carbon compound. Now, for this particular cycle, the important enzyme which is required is said to be rubisco. Okay, rubisco important enzyme है, which is a ribulose bisphosphate carboxylase oxygenase. Okay, so a ribulose bisphosphate carboxylase oxygenase, this enzyme is very much important for the Calvin cycle. Okay, for the Calvin cycle. Now, but particularly ये जो rubisco enzyme होता है, it has 2 active site to it. Okay, इसका जो active site है, this active site binds to both carbon dioxide and oxygen. इसलिए इसका नाम है ribulose bisphosphate carboxylase oxygenase. Okay, इसका दोनों ऐसे नाम लिए हुए हैं. So जो carbon dioxide अगर in the atmosphere where there is very much high concentration of carbon dioxide and it will bind to the carbon dioxide. अगर oxygen का amount ज़्यादा है, then it will bind to the oxygen, and when it binds to the oxygen, then Calvin cycle will not take place. That means glucose will not form when rubisco binds to oxygen. तो ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि जो रुबिस्को है अगर उसने कार्बन डाइऑक्साइड को बाइंड किया तो ये कैल्विन साइकिल चलेगी, अगर नहीं करता है and if it binds to oxygen then another cycle will take place, okay, which is said to be a wasteful cycle as plant do not get any benefit by that particular cycle. ओके तो रुबिस्को जो है अब ज्यादा अफिनिटी तो कार्बन डाइऑक्साइड को ही दिखाता है. ओके, इट हैज मोर अफिनिटी फॉर कार्बन डाइऑक्साइड देन ऑक्सीजन. बट अगर एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन ज्यादा हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत ही कम कॉन्सेंट्रेशन है तो उस टाइम पे इट विल ऑब्वियसली बाइंड टू दी ऑक्सीजन. एंड वन मोर थिंग कि इन दिस साइकिल जो प्राइमरी एक्सेप्टर होता है, द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड है उसको जो कंपाउंड बाइंड करेगा, दैट इज सेड इज अ 5 कार्बन कीटोज शुगर विच इज RUBP. ओके, इस 5 कार्बन कीटोज शुगर RUBP जिसको हम लिख सकते हैं राइब्यूलोज 1,5 बिस phosphate. Okay, ribulose 1,5 bisphosphate. Now this particular cycle जो C3 cycle है और Calvin cycle, it takes place in 3 steps. Okay, इनके मेन जो है वो 3 steps होते हैं. So when we talk about this steps of C3 pathway, we will talk about, first thing is the carboxylation. Next जो है that is the reduction step, and the third one is the
रीजनरेशन। ओके, तो ये पूरी जो साइकिल है वो इन 3 स्टेप्स में होती है। So let's see the cycle. Okay, so in this cycle you can see that this cycle will take place in the chloroplast in the स्ट्रोमा रीजन। ओके, स्ट्रोमा में रहता है, जैसे कि आप यहाँ पे छोटा सा जो है उसमें आप देख सकते हो। You can see so the Kelvin cycle, for the Kelvin cycle you require external carbon dioxide. So carbon dioxide will come inside. Okay, it will be taken inside the chloroplast. So carbon dioxide जो है it will be taken up by RUBP. तो RUBP जो है वो प्राइमरी एक्सेप्टर होता है in the presence of the enzyme rubisco. तो in this presence it will convert it will form a compound which is a short lived intermediate compound, so it is unstable compound, तो immediately change हो जाता है into 3-phosphoglycerate और 3-phosphoglyceric acid। ओके, तो ये जो है वो stable 3 carbon compound है, जो कि that is the first phase of this Calvin cycle, जो कि carbon fixation और carboxylation जिसको हम बोलते हैं। After the formation of this 3-phosphoglycerate, there is some reduction step which will go on. So 3-phosphoglycerate is reduced to 1,3-phosphoglycerate. Okay, 1,3-phosphoglycerate. So there is जो भी phosphate group है उसका addition होगा यहाँ पे in the presence of a kinase enzyme over here. 1,3-phosphoglycerate बाइफॉस्फोग्लिसरेट फॉर्म होगा। ठीक है, सो व्हेन दैट इज फॉर्म एटीपी यूज्ड, तो एटीपी यहाँ पे यूज होगा। आफ्टर दैट दिस इज गेटिंग रिड्यूस्ड, तो एनएडीपी जो है यहाँ पे एनएडीपीएच यहाँ पे यूटिलाइज होता है, एंड in the presence of NADPH 1,3-bis phosphoglycerate will change into glyceraldehyde 3-phosphate. So this is the sugar which is the precursor, you can say. This is the precursor for the formation of glucose. So if you consider this cycle, the Kelvin cycle, you will not find glucose formation inside this cycle. Okay, inside this cycle मतलब step by step में ये जो 3 steps हैं उसमें आपको मिलेगा नहीं ग्लूकोज फॉर्मेशन का। ग्लूकोज विल बी फॉर्म्ड फ्रॉम दिस ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-phosphate जो फॉर्म हुआ है उसके कुछ मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज बनाएंगे और बाकी के मॉलिक्यूल्स जो है दे विल अंडरगो द रीजनरेशन ऑफ ribulose bisphosphate. They will undergo the regeneration of ribulose bisphosphate. Now, when one carbon dioxide goes inside this Kelvin cycle, okay, for the Kelvin cycle, one अगर carbon dioxide है तो glucose नहीं बनेगा. As you all know, glucose has 6 carbon. Okay, glucose is a 6 carbon compound. So for that it requires 6 carbon. तो इसलिए ये जो cycle है, ये जो Kelvin cycle है, उसमें 6 molecule of carbon dioxide should react with 6 molecules of ribulose bisphosphate. Okay, 6 molecules of ribulose bisphosphate से react होना है तो ही आपको ये एक molecule of glucose at the end मिल सकता है। So when we summarize this, we can say कि in and out की जब बात करें तो 6 carbon dioxide will give you 1 glucose. ओके, तो कितने एटीपी लगेंगे? 18 ATP will go in and 12 NADPH will be required to form
12 NADP. So this is the actual count of this Kelvin cycle for the formation of one glucose. ओके तो एक साइकिल की जब अगर बात करें, वन साइकिल में 1 कार्बन डाइऑक्साइड, 3 ATP and 2 NADPH is required. ओके तो एक साइकिल के लिए एक कार्बन डाइऑक्साइड, 3 ATP, 2 NADPH इज रिक्वायर्ड, बट एक कार्बन डाइऑक्साइड से एक ग्लूकोज नहीं बनेगा. फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वन ग्लूकोज यू रिक्वायर 6 कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, तो वो समरी मैंने यहाँ पे लिखी है. So for your KVPY thing, you only need to know what is the first product, stable product of Calvin cycle, which is said to be a 3 carbon compound, 3 phosphoglyceric acid और 3 phosphoglycerate. Okay, ये first compound होता है. And for one glucose formation, how many carbon dioxide is required? Which is the first or which is the primary acceptor of carbon dioxide? तो उसका आंसर क्या होगा? ये ribulose bisphosphate is the primary acceptor of carbon dioxide. ठीक है, in the Calvin cycle. एंड ये जो साइकिल है वो सारे प्लांट्स में होगा. ओके सारे प्लांट्स जो है वो कार्बन इसी साइकिल से, केल्विन साइकिल से ही दे विल प्रोड्यूस ग्लूकोज. ठीक है, they will produce glucose. Now in the environment there are different kinds of plants, there are different kinds of trees are present. एक होता है C3 plants, दूसरे होते हैं C4 plants. अब C3 plants में सिर्फ और सिर्फ यही साइकिल चलेगी, मतलब इसी मैनर में चलेगा. And the whole of the cycle will take place in the mesophyll cells. तो ये जो साइकिल है, this cycle occurs in the mesophyll cells. Okay, C3 and C3 plants so this cycle takes place in C3 plant. And C3 plant का मतलब है टोमेटो, मैंगो. ओके ये सारे ही C3 प्लांट्स होते हैं, ओट्स एक्सेट्रा. तो जो भी नॉर्मल प्लांट्स हैं जैसे कि टोमेटो, मैंगो, ओट्स, जैक फ्रूट, और देन यू हैव मोस्ट ऑफ द प्लांट, जो भी आप प्लांट देखते हो ना ऐसे, तो दोज आर द C3 प्लांट जिसमें सिर्फ और सिर्फ यही साइकिल होगी. एंड इट विल टेक प्लेस इन द मेसोफिल सेल्स ओनली, मतलब सिर्फ एक सेल चाहिए होते हैं इस साइकिल के लिए. बट देयर आर फ्यू प्लांट्स जिसको हम C4 प्लांट्स बोलते हैं. दो इन दोज प्लांट्स, इन जो C4 प्लांट्स होते हैं उनमें अलग उनमें दे हैव 2 सेल्स, एक है मेसोफिल सेल और दूसरा है बंडल शीट सेल्स. तो उनमें वैसे मतलब दोनों सेल्स में रहता है ये साइकिल. सो दे हैव सम अडेप्टेशंस, यू कैन से डिफरेंट काइंड ऑफ अडेप्टेशंस. ओके तो ऐसे उनमें काइंड ऑफ एनाटॉमी रहती है इन द C4 plants. C4 plants have this Kranz anatomy. ओके उनमें ये काइंड ऑफ एनाटॉमी रहती है जहां पे दे विल हैव मेसोफिल सेल्स. ओके बाहर के साइड में जो है ये मेसोफिल सेल्स है. एंड इनसाइड दिस they will have this bundle sheet cells. Okay और फिर यहाँ पे वेस्कुलर बंडल्स होते हैं. वेस्कुलर बंडल्स will be there. You have the bundle sheet cells and then you will have the mesophyll cells. So mesophyll it's kind of a ring type formation. Okay उसके इसलिए इसको Kranz anatomy बोलते हैं. Kranz का मतलब है वृत्त फॉर्मेशन.
ओके, वृत्त का मतलब है रिंग टाइप, तो ऐसी होती है इन द C4 plants. एंड सम एग्जांपल्स ऑफ C4 plant is maize, sugar cane. Okay, maize, sugar cane. Then you have amaranthus, पार्थेनियम, ये सारी वीड्स हैं, पार्थेनियम, sorghum. Okay, the bajra वगैरह. So these particular plants, they will have this they are called as the C4 plants, and in them the C4 pathway will take place. So यहाँ पे C4 pathway होता है. अभी जो हमने डील किया था दैट वाज अ C3 पाथवे एंड दिस इज अ C4 पाथवे. C4 पाथवे में जो फर्स्ट कंपाउंड जो फॉर्म होगा दैट विल बी अ 4 कार्बन कंपाउंड. ओके, 4 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड एक फॉर्म होता है. सो दैट्स व्हाई दिस द नेम इज C4, और दिस इज आल्सो कॉल्ड एज द हैच एंड स्लैक pathway. On the name of the scientist who had discovered this, Hatch and Slack is the name of the scientist. ठीक है. So in this particular pathway, now in this particular thing, ये जो है this is a mesophyll cell और ये है bundle sheath. Okay, mesophyll cell and the bundle sheath cell. So what happens, जो carbon dioxide है from the atmosphere, carbon dioxide to atmosphere से है, that will diffuse inside the mesophyll cell. Okay, it will be taken up by mesophyll cell, and this carbon dioxide it reacts with the PEP. Okay, PEP जो है यहाँ पे phosphoenol pyruvate है. This is phosphoenol. Okay, this is a phosphoenol pyruvate. So ये एक primary carbon dioxide acceptor है in the C4 plants. Once this react in the presence of peptidase enzyme. Now the importance of this enzyme is that this will only bind to the carbon dioxide. Okay, तो यहाँ पे ऐसे ऑक्सीजन के लिए इसके पास एक्टिव साइट नहीं है. It will only bind to the carbon dioxide. और ये एक्चुअल में ये क्यों एडेप्टेशन है. These particular plants जो भी maize है, sugar cane है, these particular plants live in the environment where there is a low amount of carbon dioxide. Okay, तो एटमॉस्फेयर में थोड़ा कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कम रहता है. इस वजह से this peptidase enzyme is present in the mesophyll cells. If the Rubisco enzyme was present in the mesophyll cell instead of peptidase, then what would happen? The Rubisco will bind to the oxygen, and अगर oxygen के साथ Rubisco ने bind कर दिया, तो obviously there won't be formation of glucose, but some wasteful process will take place, जो कि plants के लिए अच्छा नहीं है, उनकी productivity कम हो जाती है. ठीक है, तो इसलिए ये जो मेज, शुगर केन एंड ऑल है, उनमें ये पेप्टेज एंजाइम रहता है इन द मेसोफिल सेल्स, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाइंड हो सके. तो after this reaction, the first
स्टेबल कंपाउंड जो फॉर्म होता है दैट इज ऑक्सैलो एसिटिक acid. Okay, oxaloacetic acid, which is a 4-carbon compound. It's a 4-carbon compound which is formed. This will change into malic acid, जो कि एक 4-carbon compound है. Okay, ये भी एक 4-carbon compound है. This malic acid will then get transported from this प्लाज्मोडेस्मेटा. ओके, यहाँ पे प्लाज्मोडेस्मेटा है, तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो रहा है इसका इनटू द बंडल शीट सेल थ्रू द प्लाज्मोडेस्मेटा. सो मैलिक एसिड विल गो ओवर हियर. व्हेन दिस मैलिक एसिड गोज ओवर हियर, a step called as decarboxylation will take place. Decarboxylation का मतलब है removal of carbon dioxide. So over here there is removal of carbon dioxide which will take place, and अगर मैलिक एसिड से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होता है तो जो कंपाउंड फॉर्म होगा दैट इज अ पायरुविक एसिड which is a 3-carbon compound. Okay, pyruvic acid is a 3-carbon compound. This pyruvic acid which is formed will come back into this mesophyll cell. Okay, it will get transported over here, and अगर जब वो ट्रांसपोर्ट होता है it will help in the regeneration of phosphoenol pyruvate, and during the regeneration there is requirement of 2 ATP. Okay, 2 ATP यहाँ पे खर्च होते हैं. Okay, 2 ATP यहाँ पे खर्च होते हैं for the regeneration process. Now, जो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हुआ था और डिकार्बोक्सिलेशन से जो रिलीज हुआ था कार्बन डाइऑक्साइड, दैट विल अंडरगो Calvin cycle. Okay, that will undergo that will make Calvin cycle, and glucose will be formed. And यहाँ पे जो enzyme है that is rubisco. ठीक है. So this is how the C4 pathway will take place. This is an adaptation the C4 plants will make in order to trap maximum of carbon dioxide from the atmosphere, because in the atmosphere there is low amount of carbon dioxide. ठीक है. तो यहाँ पे डबल कार्बोक्सिलेशन डिकार्बोक्सिलेशन होता है, सॉरी डबल कार्बोक्सिलेशन होगा. एक तो दिस स्टेप, दिस इज 1 कार्बोक्सिलेशन and this is 2nd carboxylation. So double carboxylation is seen in the C4 plants. You can say one in the mesophyll cell, another one in the bundle sheath cell. Rubisco यहाँ पे bundle sheath cell में present है, but in the C3 plant it was present in the mesophyll cells. So यहाँ पे ग्लूकोज बनाने के लिए तो एक ही साइकिल है हमारे पास, दैट इज द कैल्विन साइकिल ओनली. तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन हमेशा जो है वो कैल्विन साइकिल या C3 साइकिल से ही होगा. बट ये जो अलग अलग mechanisms होते हैं, these are just the adaptations which the plant will make, okay, in order to survive and productivity बढ़ाने के लिए. So if you see the productivity of C3 plants and the C4 plants, the productivity will be more of the C4 plants, क्योंकि यहाँ पे कुछ वेस्टेज नहीं होता. तो यहाँ पे पेप्किल्स जो है वो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ही बाइंड करेगा. एंड अनदर वन जो भी यहाँ पे डिकार्बोक्सिलेशन से बंडल शीट में जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है वो हमेशा जो है वो ग्लूकोज बनाने में हेल्प करेगा. इट विल नॉट गेट वेस्टेड. ठीक है. बट अगर हम C3 प्लांट की बात करते हैं तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड माइट नॉट गेट बाउंड टू दी रूबिस्को, क्योंकि ऑक्सीजन अगर ज्यादा है तो ऑब्वियसली रूबिस्को विल बाइंड टू दी ऑक्सीजन. ठीक है. सो यहाँ पे इफ यू सी दी, मतलब अगर हम समरी की बात करें, ओके, कंक्लूजन की बात करें, तो जो यहाँ पे प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर है इन द Hatch-Slack पाथवे, इट इज द PEP, दैट इज फॉस्फोइनॉल पायरुवेट. ओके, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट होता है. ये जो साइकिल है, ये जो पाथवे है, it will occur in both mesophyll and bundle sheath
ओके, मेसोफिल एंड बंडल शीट दोनों में रहेगा। अगर हम एटीपी काउंट देखते हैं, एटीपी यूज्ड यहाँ पे कितना हुआ, अगर हम C4 पाथवे का ही बात करेंगे, C4 पाथवे में इफ यू सी 2 ATPs यहाँ पे यूज होती हैं, 2 ATPs यूज होती है। एंड इट ऑल्सो हैज द केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल में हमने कितनी एटीपीज देखी थी, सो नॉर्मल एक साइकिल जो होती है केल्विन साइकिल की, तो उसमें 3 एटीपी यूज होते हैं। तो इन टोटल जो C4 पाथवे जो है और जो हैचन स्लैग पाथवे है उसमें 5 एटीपीज फॉर 1 कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, 5 एटीपीज फॉर 1 कार्बन डाइऑक्साइड, बट वी नो कि 6 carbon dioxide is required, so 30 ATPs will be giving you 1 ग्लूकोज। ओके, 30 एटीपी चाहिए तो ही आपको एक ग्लूकोज मिलेगा इन दी C4 पाथवे। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज सेशन। यस, इन एंड आउट इज फॉर केल्विन साइकिल। ओके, केल्विन साइकिल के लिए इन एंड आउट हम यहाँ पे देखते हैं। इन एंड आउट इन टर्म्स ऑफ 6 कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, 6 कार्बन डाइऑक्साइड के लिए देख रहे हैं हम। Yes, I think everyone is clear with this. C3 and C4 plants and C3 and C4 pathway. Okay, so C3 plants will be with regard to the C3 pathway. Okay, जिसमें सिर्फ और सिर्फ C3 पाथवे होगा, सिर्फ और सिर्फ C3 पाथवे होगा, वो C3 प्लांट्स है। और C4 प्लांट्स मतलब जिसमें ये टाइप ऑफ एनाटॉमी रहती है, ग्रैंड एनाटॉमी रहती है, एंड मेसोफिल एंड बंडल शीथ आर टेकिंग पार्ट इन द फोटोसिंथेसिस। ठीक है, so this is all for today's session. Thank you everyone for joining in. See you in the next session. Till then, bye bye.